Match list 1, list 2. Select the correct answer by using the codes given below. Indian Council Act देछि गोटे साइड रे Indian Council Act 1861 रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रो Indian Council Act 92 रो 1892 आउ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 देछि गुड आफ्टरनून हाडा गोटे फोल्डर रे डिफरेंट सब्जेक्ट करि रखा हबो तो सेकंड लिस्ट रे देछि तेतरे थिबा जो प्रोविजनस उडा को एक्ट रे को टाइप रो प्रोविजनस आसीथिला तेतरे प्रथम प्रोविजन होची इंट्रोडक्शन ऑफ डायरची प्लेस्ड इंडियन अफेयर्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन एंड इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन एतिकिटा जिंस एतरे देछि पोलिंग करबिनी मु काई एटा बड़ बड़ क्वेश्चन उडा समय लागिवो बहुत इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ताकू जदि हमें मैच करबा इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन 1861 रे जो इंडियन काउंसिल एक्ट आमे जदि सहज गुडा आगो बाछिबा आगो सहज बाछिले तुम जानि छ जे कोन डायरची वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1919 तो डायरची टा इंट्रोड्यूस हेतिला 1919 रो एक्ट रे 1919 रे डायरची इंट्रोड्यूस हेतिला प्रोविंशियल लेवल रे 1935 रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे ताको सेंट्रल लेवल रे करा जाइतिला और प्रोविंशियल लेवल रो हटा जाइतिला तो गुटे तो मैच हे जाउछ माने आइदर आंसर टा बी हबो न हले डी हबो माने काहे कि ना एटा 1 होछि ओके ए जिंसटा 1 होछि सेति पे ओके ए जिंसटा जेहेतु 1 होछि सेति पे आइदर बी हबो न हले डी ओके एबे हमकु एमती करिया को पड़ियो काहे कि ना हमें मे बी सब जिंस एग्जाम रे हमकु मने न पड़ी पारे तो फास्ट एही प्रोसीजर रे जीवा को पड़ो तापरे हमें बाछिबा कोटा हम द्वारा हे करी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 टा एटा डिफिकल्ट हो ओके कागे एटा ओडे हम पढुथुबा भीतर ओडे मेजर एक्ट नु होबा मेजर प्राइमरी एक्ट गुडा को उडा फास्ट जोटा रेगुलेटिंग एक्ट सेटा हम टिके भलसे मन रखि थाउ तापरे पिट्स इंडिया एक्ट टिके मन थाए ओके तापरे सीधा जाईकी 1813 1833 चार्टर एक्ट गुडा को ओके तापर 1858 रो जो क्वींस प्रोक्लेमेशन हैला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 एउडा का हमकु नॉर्मली मन था तापर डायरेक्ट हमकु 909 जो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स आ मोंटागु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जोटा 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तापर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एउडा को टिके हमकु मन था बाकी उडा को डिफिकल्ट मन रखिया सब मन न था ओके तो आमे नेक्स्ट जोटा बाछिबा पिट्स इंडिया एक्ट कथा बाछिबा पिट्स इंडिया एक्ट ता कोटा ही परियो पिट्स इंडिया एक्ट कोन करथला पिट्स इंडिया एक्ट ता प्लेस्ड इंडियन अफेयर्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट रो डायरेक्ट कंट्रोल रे इंडियन अफेयर्स को आनितला माने भारत रे जहा हबो जहा न हबो सेटा ब्रिटिश पार्लियामेंट ताको कंट्रोल करबो ब्रिटिश मानकर डायरेक्ट कंट्रोल रे आसी ओके जोटा कि ता पूर्व एक्ट रे कोन सेटा ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ रे था ओके तो ये दीटा को हमें मैच करी परिबा प्रोबेबली दीटा आंसर हबो ओके जो थरा हमर कोन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 टा हे जिवो हमर जो इंट्रोड्यूस्ड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस रिप्रेजेंटेशन ओके आउ तापर इंडियन काउंसिल एक्ट 1982 जोटा सेटा हवा इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस इंट्रोड्यूस करथिला 1892 ओके ए सब एक्ट विषय क्वेश्चन अछि क्वेश्चन गुडोडे करी की करबा आगो ओके एठी ऑप्शन हमें डी नहीं करिवा तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन होची मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 आउ थरे बाइकैमरल सिस्टम जो बाइकैमरल लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद आगो हमें कोन बाइकैमरल सिस्टम बोली को लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चारटा ऑप्शन देछि आरोडे देछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 मोंटागु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स और मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स एठु हमें कोन सिलेक्ट करि परियो आंसर देखो चेक करो तापर मु आंसर कहबी ट्राई करिवो ना
होल देले समय हबनी दीदी बहुत क्वेश्चन अछि आ बड़ बड़ क्वेश्चन अछि बाइकैमराल लेजिस्लेशन आरंभ सॉरी बाइकैमराल सिस्टम जोटा आरंभ होइतिला केबे आरंभ होइतिला मोंटागु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से आरंभ होइतिला लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन माने सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एगुडा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर मनकर सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एगुडा लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन बीटा कोटा हबो बीटा हबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 हबो माने ऑप्शन टा सी हबो जो थरे सेपरेट इलेक्टोरेट कोठी आसीबो सेपरेट इलेक्टोरेट एटा इजी कोस्ट एटा इजीटा मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स रे सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस करिथिला ब्रिटिश गवर्नमेंट 1909 रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोविंस मानन को ऑटोनॉमी दिया जाइथिला ओके सॉरी सॉरी भूल हे गला कि लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन सॉरी लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन टा एटा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी टा होची जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल डायरची जो इंट्रोड्यूस होइथिला सेंट्रल सेंट्रल डायरची इंट्रोड्यूस होइथिला प्रोविंस मानन को ऑटोनॉमी दिया जाइथिला ऑप्शन सी हो ओके मधुस्मिता कोन लिखला सेटा consider the following regulating act Pitt's India act charter act okay Indian council act एगुडा को जदि हमें अरेंज करिवा क्रोनोलॉजिकली माने ईयर अनुसार तो रेगुलेटिंग एक्ट तो हमें जाडी छु रेगुलेटिंग एक्ट ता होची 1773 1773 पिट्स इंडिया एक्ट ता होची 1784 1784 चार्टर एक्ट दुटा आस्तिला ना 1813 और 1833 जोटा नेले भी हबो 1833 लेटर से नहीं गल ओके इंडियन काउंसिल एक्ट आसिला 1861 रे प्रथम यूज होला इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 हे गला ठीक अछि 1 2 3 4 सब ठीक अछि माने सीक्वेंस रे ही देछि 1853 भी नहीं सेंट हेलेना एक्ट को कुआ जाय 1813 ना 1833 सेंट हेलेना आइलैंड जोड़ा ट्रांसफर हेतिला एथिबे ताको सेंट हेलेना एक्ट बोली कुआ जाय एटा कोटा हला एटा ठीक हला तो जोटी भूल वाले जीव कोई distribution of power between the center and states in the Indian constitution is based on the scheme provided center state भीतर जो power distribution हला ओके सेटा कोथरे मेंशन हेथिला फास्ट मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स 1909 रे मोंटागु चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ए भीतर कोथरे सेंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हेथिला माने सेठू आसीच ओके सेंट्रल स्टेट 75% of the features of the Indian constitution are borrowed from the government of India act 1935 okay it was a lengthy and detailed document having 321 section and 10 schedule एटा टिके मन रखियो सबुठु बडा जो एक्ट थिला 1935 रो थिला जोटा कि 321 सेक्शंस थिला 10 टा शेड्यूल थिला सेथरे मेन जो प्रोविजंस गुडा को सेथरे थिला ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टैब्लिश करा गला ओके जो थरे प्रोविंसेस माने अलग रहिले और प्रिंसली स्टेट माने कोन जो माने डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश आसिले से माने प्रिंसली स्टेट हेले ओके और बाकी जो एरिया गुडा को गवर्नमेंट माने इंडिया जोटा रहिला माने ब्रिटिश अंडर ता से गुडा को प्रोविंस रे डिवाइड करा जेमति बंगाल प्रोविंस मद्रास प्रोविंस हला बॉम्बे प्रोविंस सेंट्रल प्रोविंस यूनाइटेड प्रोविंस नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ए टाइप ओके द एक्ट डिवाइडेड पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द यूनिट्स टर्म्स एट थ्री लिस्ट फेडरल लिस्ट जो थरे से समय 59 टा आइटम्स थिला प्रोविंशियल एटा डी मन रखियो ओसीएस वाला फेडरल लिस्ट रे एट दैट टाइम जोटा हमर वर्तमान यूनियन लिस्ट कहउछु सेटा
फेडरल लिस्ट को जाइतिला 59 टा प्रोविंशियल लिस्ट रे 54 टा जोटा कि हमें वर्तमान हमें स्टेट लिस्ट बोली कहउछु और कंकरेंट लिस्ट एट दैट टाइम 36 आइटम्स थिला जोथरे बोथ कर पावर इंक्लूड होतला आ बाकी जो गुडा को लिस्ट रे नथिला से पावर्स गुडा कहा हाथ रे जाउतला वाइसरॉय जे थिबे तांको हाथ को जाउतला रेसिडुअरी पावर्स ओके ता सहित अन्य गुडा जिंस थिला जेमति कोन एटा एबोलिश डायरची इन द प्रोविंसेस जोटा कि ऑलरेडी मु कहिसे ला प्रोविंस मानन को ऑटोनॉमी दिया गला डायरची टाकू सेंट्रल लेवल रे पका गला ओके the act introduced the responsible governments in the provinces okay that is the governor was required to act with the advice of the minister responsible to the provincial legislature जो minister माने elect हे कि आसीथिबे तांकर एडवाइस अनुसार गवर्नर काम करिवे जोटा कि वर्तमान मध्य अछि ओके 1935 रे एक्ट आसीथिला ई सब जिंस 1937 रे केम इनटू इफेक्ट ला किंतु प्रॉब्लम हेतिला कोन जे याको डिसकंटिन्यू कर दे देथिला 1939 रे 35 रो एक्ट रे इंट्रोड्यूस हेतिला ई जिंसटा 37 रे लागू हेतिला 39 रे उठे दिया जाय ओके एडॉप्शन ऑफ डायरची एट सेंटर जोटा कि कहि सर फेडरल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स ओके फेडरल सब्जेक्ट जोटा का थिला जोटा सेंटर हाथ रे थिला ताको दुईटा पार्ट डिवाइड कराला गोटे को रिजर्व सब्जेक्ट को हागला गोटे को ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट बोली को हागला ओके तापरे से समय जो 11टा प्रोविंस थिला से भीतर 6टा प्रोविंस रे बाइकैमरल लेजिम आसिला बाइकैमरल लेजिम माने दुईटा हाउस रहिबो बोथ से प्रोविंसेस मानन करे ओके बंगाल बॉम्बे मद्रास बिहार आसाम और यूनाइटेड प्रोविंस एमानकर बाइकैमरल रहिला एबे भी 6टा स्टेट रही बाइकैमरल अछि ना अपर हाउस लोअर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली विधान सभा विधान परिषद ओके तापर आउ इंपोर्टेंट पॉइंट हला 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ओके सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिप्रेस्ड क्लास शेड्यूल कास्ट वुमेन लेबर एमान को पय सेपरेट इलेक्टोरेट करा गला ओके सेपरेट इलेक्टेड ऑलरेडी हमर 1909 रे जोटा कि हमर मेजॉरिटी माइनॉरिटी अनुसार हिंदू मुस्लिम मुस्लिम मान को पय सेपरेट इलेक्टोरेट कथा कुआ जायतिला ओके एटा न मन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माने एस्टैब्लिश हला 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1958 रे जो काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश कराइतला ताको एबोलिश कर इट इज नॉट इंपोर्टेंट द सेक्रेटरी ऑफ फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया वाज प्रोवाइडेड with a team of advisors it extended franchise सेटा दरकार नै एटा देख 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट वोटिंग राइट्स ला वोटिंग राइट्स पाइले केते जण टोटल पॉपुलेशन रो 10% जेति कि से मानन को वोट देबा क्षमता दिया गला रिजर्व बैंक एस्टैब्लिश हेतिला ई समय रे ओके फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट को गला बदे ई समय रे ना ई समय फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश हेतिला फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश हेतिला 1937 रे काम करबा स्टार्ट कलस परे परे ताको हम सुप्रीम कोर्ट बोली कहबो से तो एटा तार मेन पॉइंट्स गुडा को गोटे टाइप रो रिवीजन ऑफ क्वेश्चन भी कले रिवीजन भी कले क्रिएशन ऑफ फेडरल कोर्ट इन इंडिया वाज एडवोकेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स और कमिशंस एटी मधुर मधुर स्पेस पड़ी क्रिएशन ऑफ फेडरल कोर्ट इन इंडिया वाज एडवोकेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स और कमिशन ठीक गला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केबे कहले बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एबे जस्ट ता पूर्व क्वेश्चन रे यार आंसर कहले which of the following statements regarding the government of India Act 1935 was is not correct provincial autonomy came into existence एबे कहि छी बा फटाफट कहबो provincial autonomy came into existence correct अछि bicameral legislation were provided 6टा प्रोविंस रे करा गला एबे तार ना उडा कभी कहले ओके principle of communal electorate and weightage were further extended okay the states were compelled to enter the federation एटा भूल अछि सेपरेट पावर रहिला बा पावर सेपरेशन रहिला प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गला ताले स्टेट्स मानन को केमिति कंपेल करा गला जे तुमे फेडरेशन जॉइन करो बोली एटा हबनी आंसर ऑप्शन डी भूल अछि सेटा जोटा हमें सेतरे कहले आइठी लिखाइ छी अरे सी हबो ना डी हो सी आंसर देलो
सी हम जे वेट करिया टिके देखियो गोटे सेकंड सी हो provincial autonomy गला principles of communal advertise for further extended subjects three list provincial abolished self council also governor communal electors for further decrease ठीक तो ଅଛି principles of communal electors weightages were further extended ठीक तो ଅଛି भूल कोन ଅଛି सीटा कोन भूल ଅଛି सी तो ठीक ଅଛି कम्युनल इलेक्टोरेट्स को फर्दर एक्सटेंड करा जायतिला ठीक तो अछि बा सीटा ठीक तो अछि भूल कोन हला The practice of communal electorates was further extended to depressed classes, women and labor. जोटा आगुरु कम्युनल इलेक्टोरेट टा खाली धर्म अनुसार होतला वर्तमान डिप्रेस्ड क्लास मानन को वुमेन लेबर मानन को पई कम्युनल इलेक्टोरेट्स को हरी एक्सटेंड करा गला ठीक अछि सी करेक्ट अछि डीटा भूल अछि राज्य मानन को कंपेल करा जाय नथिला जे से माने फेडरेशन जॉइन करिवे तांकु बा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया जायतिला तांकर बा आवरी पावर बढ़ा जायतिला लेजिस्लेटिव असेंबली मानकर जे मिनिस्टर मानन को आगो जणैबे तापर जे गवर्नर कोन एडवाइस होला पर जे एक्शन नेबे बोली which of the following is or are the principal features of the government of India Act 1990 introduction of dyarchy in executive governor government to the provinces sorry that is space उडा को ये क्वेश्चन पकिला government of the provinces introduction of the dyarchy in the executive government of the provinces introduction of separate communal electorates for Muslim devolution of legislative authority by the center to the provinces वन टा तो ठीक अछि एबे बारंबार 30 थर कहले ओके वन टा तो पूरा पूरी करेक्ट अछि वन टा पूरा दो ठीक अछि ठीक ना बाकी रहिला इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट सेटा तो नो ओके सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट सेटा हमर 1909 सेही समय माने एटा आसीथिला आई थिंक पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स ओके एटा तो हबनी devolution of legislative authority by the center to the provinces एही गुटे पॉइंट खाली देखिबार अछि ओके 13 आंसर देछ क्वेश्चन रो आंसर 13 देछ बी टा 13 देवार कारण कोन प्रोवाइडेड डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट dyarchy मेजर provinces each province control of some areas of government transport list was given to the government ministers answerable to the province एटा हे जाई छि होय सारी छु included agriculture this agriculture supervision of the local government health education एतिकी थिला एटा टिके मन रखिबो transport list रे all other areas government reserve list remain under the control of viceroy the reserve list included defense foreign affairs communication devolution of the legislative authority by the center to the provinces hela na legislative authority center to province आड़ को बेसी डिवोल्यूट करा जायतिला माने एक्सटेंड करा जायतिला
ठीक अछि एटा जो देछि गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स answerable to the provincial council 3 correct अछि which of the following are among the provisions of the act 1858 1858 administration of India Indian territories were transferred to the crown एटा ठीक अछि ओके इंडियन टेरिटरीज और इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन टा क्राउन निज हाथ रे नेला क्वीन प्रोक्लेमेशन हला करेक्ट अछि ईस्ट इंडिया कंपनी सरीला करेक्ट अछि The Governor General of India was now known as Viceroy of India, Secretary of the State for India was appointed. Correct. 1, 2, 3 correct अछि आंसर ही गला all of this तो हबनी देखिवा administrative power of India was to be shared between East India बोल अछि ईस्ट इंडिया कंपनी पळेला देखा जाउची सेमती सहज क्वेश्चन टा ऑप्शन सी 1958 रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे सब टेरिटरीज गुडा को क्राउन को हाथ को गला क्वीन प्रोक्लेमेशन हला ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर कर दिया गला गवर्नर जनरल जोटा को आगुरु कहा जाउतला वर्तमान गवर्नर जनरल वाइसरॉय बोली कहा गला आ उटे पोस्ट क्रिएट करा गला लंडन रे सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया जे की गवर्नर ऊपर बा वाइसरॉय ऊपर काम करिवे आउ गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट तळे काम करे माने से मीडिएटर भाବରେ रही बिटवीन द क्राउन एंड द वाइसरॉय ऑफ इंडिया Okay. Act 1958 has the following provision administration of India territories गला rule of एटा established हला कोई सारी चीज सेति हुडुड कर दोछि Act 1858 transferred all Indian companies official power to the crown viceroy governor various presidencies were appointed by the crown हला हां provisions of council of directors and board of control were abolished जोटा आगुरु थिला ना council of directors जोटा थिला ओटे board of control थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल टा आई थिंक पॉलिटिकल मैटर्स गुडा को संभाळुथला और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टा आई थिंक कोन हटा बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटीज को संभाळुथला एटा केबे इंट्रोड्यूस हेतिला कहलो ये जो दीटा पोस्ट क्रिएट करा जायतिला बा दीटा जो ऑफिस क्रिएट करा जायतिला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एटा को एक्ट अनुसार क्रिएट करा जायतिला को एक्ट को ब्रिटिश एक्ट टा ई दीटा इट्स इंडिया 1784 ओके तो भाइसरॉय को असिस्ट करिया पे गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहउतला द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज मेंबर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स कैबिनेट एंड ब्रिटिश एमपी ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जन को बछा जाउतला सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भाबरे जे कि प्राइम मिनिस्टर कर कैबिनेट रे बा मंत्रिमंडल रे रहउतले ओके डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी भाबरे ऐड हला भारतटा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हां एटा टिके मन रखियो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की इंट्रोड्यूस करथिले जा को ए जो एक्ट आसी की कोन एंड कर दला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एंडेड जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पई कोन हितिला संबलपुर ओके ओडिसा रो ऐड हितिला गोटे प्रिंसली स्टेट भाबरे क्राउन अंडर सॉरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर ओके आहुरी गुडा जगह थिला झांसी एटसेट्रा ओके सतारा जो मराठा एरिया टा 1948 रे सॉरी 1848 रे 1849 रे आई थिंक संबलपुर तापरे विभिन्न अन्य गुडा को भी थिला जुनागढ़ एटसेट्रा it also had provisions for the admitting Indians into civil service एटा भी मेन पॉइंट था सिविल सर्विसेज रे इंडियन मानको चांस मिलला डुअल गवर्नमेंट जोटा इंट्रोड्यूस हेतिला पिट्स इंडिया एक्ट हला पिट्स इंडिया एक्ट समय डुअल गवर्नमेंट आसीतिला डुअल गवर्नमेंट ओके पिट्स इंडिया एक्ट समय ओके ताकू भी एबोलिश पिट्स इंडिया एक्ट रे 1784 रे इंट्रोड्यूस हेतिला डुअल गवर्नमेंट ताकू आसी की 1858 रे एबोलिश करा गला सिमिलरली जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है सेटा भी पिट्स इंडिया एक्ट रे इंट्रोड्यूस हेतिला एटी एंड हला ओके फर्स्ट वाइसरॉय हेले लॉर्ड कैनिंग पूर्वरु भी और परे भी ऑप्शन बी देछि की भूल देथिबो ऑप्शन भूल देछि ऑप्शन हमरा कोन हला सी हला ना
इंटरनेट साइट्स गुड़ा बुक गुड़ा करे बेले बेले भूल भाल हो जाए खराब भावियार नहीं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री प्रिंसिपल ऑफ डायरची रेफर्स टू सब आम गोटे गोटे करके पढ़ीचु तो खाली गोटे रिवीजन करदे कथा एमसीक्यू सहित एक्सप्लेनेशन भी अच्छी इंडियन हिस्ट्री प्रिंसिपल ऑफ डायरची रेफर्स टू कौन एटा सहज क्वेश्चन टा डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउसेस भूल ओके सेटा तो ये हला ना बाइकैमरलिज्म हला इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल गवर्नमेंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सेटा भी भूल टू सेट्स ऑफ रूलर्स लंडन रे गुटे दिल्ली रे गुटे आ आम गाँव रे गुटे ऑप्शन डी हवा डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज ओके जोटा को पर सेंट्रल प्रोविंसेस मानक सेंट्रल ईयर भी ऐड करा हितो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ओके मोंटागु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ओके सही समय वाइसरॉय चेम्सफोर्ड थिले आ मोंटागु सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया थिले इन 1918 इंट्रोड्यूस करथिले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स गुडा को गुटे एक्ट माध्यम रे जहा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 मोरली सॉरी मोंटागु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म चेम्सको मोंटागु रिफॉर्म जोटा कहले भी हम the provincial legislative councils were enlarged majority of their members were to be elected members बेसी हेले legislative council रे okay under the system of dyarchy provincial governments were given more powers okay फाइनेंस लॉ ये वाला सब्जेक्ट गुडा को लॉ एंड ऑर्डर ये गुडा को गवर्नर हाथ रे रहिला डायरेक्ट कंट्रोल रे अला जहा को रिजर्व सब्जेक्ट्स बोली कहा गला और ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स गुडा को मिनिस्टर्स मानक हाथ रे रहिला ओके जेमती कोन आमे पूर्व क्वेश्चन रे भी कहिथिले एजुकेशन पब्लिक हेल्थ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एगुडा which of the following act was described as by Jawaharlal Nehru as the charter of slavery जवाहरलाल नेहरू को एक्ट को चार्टर ऑफ स्लेवरी बोली कहते चार्टर माने कोन एग्रीमेंट अब देखो 1973 1984 रे तो बोधे जवाहरलाल नेहरू जन्म ही नथिले एई थिबे मैं भी छोट थिबे तो सेते बेले तो ताकर एते बुद्धि नथिबो लक्ष्मीकांत भाई पढी नथिबे सेते बेले तो आइदर ना 19 थिबो लाले 35 थिबो 19 तो जवाहरलाल नेहरू कर ना चिन्ह नथिला ओके जवाहरलाल नेहरू पॉलिटिकल सिनेरियो रे बेसी देखा देले केते बेले थले सिमन कमिशन आस्थिला मोती जो मोतीलाल नेहरू से जो ये नेहरू रिपोर्ट बनेथिले सेही समय रे ड्यूरिंग दैट पीरियड सेही समय रे पॉलिटिकल सिनेरियो रे जवाहरलाल नेहरू भलो भाबरे देखा जायथिले 1928 29 बेले से 1918 माने 1930s रे ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 माने ये वाला क्वेश्चन आंसर तुम सेमिति भी करि परियो जदि तुम टिके नटखटिया भाबरे भाबी परियो ताको से चार्टर ऑफ स्लेवरी बोली कहिथिले काई एमदी कहिथिले बिकॉज़ एटा अडॉप्ट करा हितिला पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम जेमती थिला जस्ट सेटा गुटे थिला एटा जस्ट कॉपी पेस्ट थिला यूनाइटेड किंगडम रो पार्लियामेंट रो जहा रूल्स रेगुलेशन रो गुटे कॉपी पेस्ट थिला ओके जोटा कि मेनली ब्रिटिश रूल ता केमती सेफगार्ड हेकी रहबो अधिक दिन जाय भारत रे ता पई ताकू फोकस करूथुला डोमिनियन स्टेटस दिया जाय नथिला जोटा कि डिमांड करूथुले भारतीय माने सेटा को माने बेखातिर कर दिया जायथिला इथरे ओके प्रोविंशियल डायरची को हटे दिया जायथिला सेंटर रे डायरची लगा जायथिला माने प्रोविंसेस मानक रे ऑटोनॉमी बेसी क्रिएट करा जायथिला ठीक ना एगुडा को Which of the following was were the main features of the government of India 1919 मधुस्मिता दीदी भाबुथुओ खाली मु जोटा पठै दिली से क्वेश्चन उडा त एठी नाही अछि अछि ओरे अछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 act provided for the establishment for the first time in India for a public service commission act provided for the establishment for the first time in India of a public service commission act provided the appointment of an Indian to the viceroy's executive council as well as provincial executive council a provision was made for classification of central provincial subject very difficult question ठीक है नो बहुत difficult question
ए भितर कोटा कोटा तार प्रोविजन हो 1919 रो 1919 Montagu Chelmsford reform. तो 1919 रो मेन ये गुडा जदि देखिबा the act provided for the establishment for the first time in India public service commission से पॉइंट टा ठीक अछि पीएससी जोटा कि आई थिंक 1924 रे तार माने चिन्ह वर्ण देखा जायतिला 1926 रे बोधे एस्टैब्लिश हेतिला Union government create our second provision made the classification of central provincial subjects. Okay. Central subjects और provincial subjects रो classify करा जायतिला अलग अलग करा जायतिला दीटा पॉइंट ठीक हे गला Union government created the constitution of India as the legislative executive judicial authority to govern the union of 28 states and 8 union territories is known as government of India abbreviated as GOI it is known as the central government and union government other significant features 1919 for the first time in India act provided for the establishment of a public service commission statute by law also stipulated that after 10 years statutory commission would be established to investigate the governor's operations Simon commission was established माने 1919 रे जहा रूल्स रेगुलेशन करा जायतिला 1926 रे ली कमिशन जोटा हमर यूपीएससी रो माने बड़ोदरा पड़िथिला पब्लिक सर्विस कमिशन हां 1919 रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एटा थिला जे कोन जो जहा भी लॉस गुडा को बना जाउची जेमती डार्ची इंट्रोड्यूस हेतिला कोथरे हमर जो प्रोविंशियल लेवल रे ताकू गवर्नमेंट कोबली भाबरे ऑपरेट करूची गवर्नमेंट रो ऑपरेशंस को टाइप रो अछि ताकू चेक करिवा पई सिमन कमिशन आसीथिला 1927 आगिना सेतरे लेखा हेतिला जे 10 वर्ष भितर आ गोटे कमिशन नियुक्त हबो से आसी कि तापरे को रिपोर्ट बनेबो रिपोर्ट जदी पॉजिटिव हैला लॉ टा कंटिन्यू हबो एक्ट कंटिन्यू हबो नहले सेतरे चेंजेस करा दिबो अमेंडमेंट्स करा दिबो जो अमेंडमेंट्स टा करा जायतिला 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ओके इंडियन हाई कमिश्नर ऑफिस लंडन एटा टिके मन रखिबो एई एक्ट अनुसार भारत रो जने हाई कमिश्नर नियुक्त हेबे जे कि लंडन रे अपॉइंटेड हेबे ओके तो एथरे आमे कोटा कोटा कले दुटा तो हे गला वन ठीक हे गला एग्जीक्यूटिव प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल provision was made for classification of ठीक अछि सब ठीक अछि आई थिंक that provided for the appointment of an Indian to the Viceroy Executive Council ठीक अछि आई थिंक 1 2 3 सब करेक्ट अछि Which of the following are features of the Regulating Act 1773 1773 Establishment of Supreme Court Kolkata 1774 करेक्ट अछि तो ए जो जिनसटा करेक्ट अछि तो पूरा बताओ बताओ जल्दी सेवेंटीन सेवेंटी फोर करेक्ट अच्छी created council of Governor General of Bengal executive council गवर्नर जनरल पोस्ट क्रिएट हला तापर तांको अंडर गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहला मेड द गवर्नर्स ऑफ बेंगल मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेजिंग खुलना एटा परे हेतिला पिट्स इंडिया एक्ट 1 2 3 ओके एडा तो हम जानि छु 1765 रे ईस्ट इंडिया कंपनी कोन जो अलाहाबाद ट्रीटी हेतिला ता अनुसार दीवानी राइट्स होइतिला बिहार बेंगल ओडिसा रो ओके 1773 the great constitutional importance as the first step of the British government to control regulate the East India Company ता छाड़ दे कोई सर which were the changes introduced by the Indian Independence Act 1947 it provided right to secede from British Commonwealth
It gave two options to princely state: join either India or Pakistan. It made India dominion. It abolished office of viceroy. बताओ बताओ। सिसिड माने कौन? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ क्या कुआ जाए? ब्रिटिश अंडर जेतिकी रीजन गुडा आसुथिले तार कॉलोनीज गुडा तांको मिसिकी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कुआ जाए। कॉमनवेल्थ गेम्स होइतिला ना 2010 मसिया। तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को छाड़ी पारिबो बोली ए लॉ रे लिखा है। चाहिए ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को छाड़ी पारिबो। ओके, इट गेव टू ऑप्शंस टू द प्रिंसिली स्टेट। इंडिया पाकिस्तान जहाँ को भी जॉइन करिबो, जो 568 प्रिंसिली स्टेट थिले, जो भितर 7-8टा पाकिस्तान को जॉइन करथिले, बाकी सब इंडिया को जॉइन करथिले। इट मेड इंडिया डोमिनियन, करेक्ट अछि। आउ एबोलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय। वाइसरॉय ऑफिस टा एबोलिश हेतिला कि? वाइसरॉय जो ऑफिस टा थिला सेटा एबोलिश हेतिला कि? 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट प्रोविजंस देखिदबा, तापर डिस्कस करिया। फीचर्स गुडा कौन थिला? इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट हला, किंतु ट्रांसफर ऑफ पावर हेतिला जून 1948 जाए, ठीक ना? धीरे धीरे छाड़ी थिले से माने। It provided for the partition of India and creation of two independent dominion in dominion of India and dominion of Pakistan. जो मान को कौन सिसिड करी परिबे बा छाड़ी परिबे चाहिए ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, नहले रही भी परिबे बोली सेतरे लेखा है। It abolished the office of viceroy, provided each dominion a governor general। हाँ, एटा viceroy ऑफिस को हटा गला, जो गवर्नर जनरल बोली कुआ गला। Was to be appointed by the British king or queen on the advice of Dominion cabinet। ओके, माने डोमिनियन माने पाकिस्तान और इंडिया रो डोमिनियन रो कैबिनेट माने मंत्रिमंडल जहाँ को चाहिए तांको गवर्नर जनरल नियुक्त करा जाई परिबो। ओके, गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वाज टू हैव नो रेस्पॉन्सिबिलिटी विथ रेस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। तो छाड़ी देलु, अब हमें तुम रहबे, तुमे कोन करियो तुमे जानो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द टू डोमिनियंस कुड फ्रेम एडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। निजे बनै परिबे, नहले जे कोनसी कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करि परिबे। Empowered the constituent assembly of the both dominions to legislate for their respective territories। निजर टेरिटरीज माने मानक पय निजे लॉ बनै परिबे, ठीक ना नै? कॉन्स्टिट्यूशन आधार रे जदि तांको पाखरे अछि। नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर 15 अगस्त, जोटा कि भारत रे लागू हबनी कि पाकिस्तान रे लागू हबो ना। एबोलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। वाइसरॉय ऑफिस गला, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया ऑफिस गला। ओके, लैप्स ऑफ ब्रिटिश पारामाउंटेसी ओवर इंडियन प्रिंसिली स्टेट। प्रिंसिली स्टेट माने फ्री हे गले, से माननकु कोन करा गला? तीनटा रास्ता कुआ गला। आइदर से माने इंडिया जॉइन करिवे, पाकिस्तान जॉइन करिवे, नहले से माने चाहिले इंडिपेंडेंट भी रहि परिवे। तांकु तीनटा रास्ता दिया गला। प्रिंसिली स्टेट माने को माने जो माने विभिन्न एनेक्सेशन पॉलिसी जेमती डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाइमितिया पॉलिसीज मानक द्वारा जो गुडा को ब्रिटिश माने एक्वायर करथिले से गुडा। It provided the governance of each of the dominion of the provinces by government of India in 1935। Okay, till new constitution was framed। माने नुआ constitution adopt किंबा न बनैला जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आधार रे इंडिया पाकिस्तान बोथ चलिबे बोली कुआ गला। तापरे हाँ, आ गोटे जिनस जे सेथिरे सेमाने से एक्ट रे सेमाने मॉडिफिकेशन करि परिबे। ब्रिटिश मोनार्क कुड नॉट veto bills, ask for reservation of certain bills for his approval, but governor general can assent to any bill in the name of his majesty। जेहेतु ब्रिटिश माने छाड़ी देले, तो ब्रिटिश माने छाड़ी देले माने भारत रे जे कोनोसी बिल गृहीत हला कि एक्ट हला जहा हला सेतिरा ब्रिटिश मोनार्क कर किछि जीवन नै। जेहेतु गवर्नर जनरल ऑफिस टा स्टिल थिला, तो से एसेंट माने गोटे प्रेसिडेंट भलिया काम करि परिबे। जेते बेले जाय तांकर ऑफिस टा थिबो, गवर्नर जनरल ऑफिस टा थिबो, से बिल मानन को एसेंट दे परिबे। बाकी और दरकार नै। तो कोटा कोटा बाछिबा। ठीक अछि, ठीक अछि, ठीक अछि, ठीक अछि। ऑल
ऑल हला तो ऑल इट गेट टू ऑप्शन हाँ 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 एटा भूल अछि रे दीटा ऑप्शन दे एटा भूल अछि तीनटा ऑप्शन थिला थ्री ऑप्शंस सी है वो सी टू जाटा भूल अछि तीनटा ऑप्शन दे से माने फ्रीडम माने फ्री भी रही पर इंडिपेंडेंट भी रही पर या सुश्रीति एमती कैपिटल लेटर रे टाइप करूछि न पढ़िले भी पढ़ी जाउछि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया एटा सहज वैद्य जीवा आगो माउंट बेटन प्लान जून प्लान इंट्रोड्यूस करथिले लॉर्ड माउंट बेटन पास करथिले जहा अनुसार इंडिया पाकिस्तान को सेपरेशन करा जायथिला और सेपरेशन परे भी 1947 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आसिला पर भी 1948 जाय लॉर्ड माउंट बेटन ही कोन गवर्नर जनरल भाव रे डोमिनियन ऑफ इंडिया रो थिले अरे दीप्ति दी कोन मोदी कहलानी मोदी आ भूली परन तुमे आ सेते बेले भी कोन मोदी थिले एबे सेना मोदी सब बेले तुम मोदी कहले हो हिस्टोरिकल पिक्चर्स मोदी पूरे फ्यूचर रे मोदी रहे what were the silent features of the government of India Act 1935 federal provincial autonomy federation and provincial autonomy dyarchy at the center abolition of dyarchy of the in the state सब करेक्ट अछि एबे तो सब डिटेल रे डिस्कस करि जबा फेडरेशन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हैला सेंटर रे डायरची को स्टेट मान करबा प्रोविंसेस मान कर उठे दिया करेक्ट अछि consider the following statement regulating act 1773 was passed by the British Parliament in order to establish parliamentary control over administration of the East India Company's territory in India make governor of Bengal as the governor general of Bengal and of dual system of administration in India regulating act 1773 अनुसार कोटा कोटा ठीक हो parliamentary control administration of East India Company's territory in India वन ठीक अछि गवर्नर बेंगल ठीक अछि से गवर्नर ऑफ बेंगल गवर्नर ऑफ बेंगल को गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल के थिले एंड ऑफ डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन केबे सरिला जाय कि पिट्स इंडिया एक्ट रे सरिला ना परे सरिला एबे कहिथिले बा डुअल सिस्टम हां 1858 1858 1858 रे सरिला एटा 1858 रे सरिला 1 2 ओके एटा फीचर थिला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रो डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल बेंगल गवर्नर हे गेला लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स थिले गवर्नर्स ऑफ द बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट रहिले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल अंडर से माने काम कले प्रोवाइडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1774 कहि सारी छु प्रोहिबिटेड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड करि परिबे नाही करप्शन कमेबा पे चेष्टा कला किट्स इंडिया एक्ट रे स्टार्ट हेतिला डुअल गवर्नमेंट 1858 रे सरी थिला act during the regime of the East India Company responsible for paving the way for shipment of the opium to China वो एक समय रे ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना अरे ओपियम शिपमेंट करि परिबले माने रास्ता क्लियर करि माने ऑटोनॉमी देथिला चाइना रे बिजनेस करिया पे ऑटोनॉमी देथिला अफीम पे वो एक्ट व्हिच एक्ट चार्टर एक्ट 1793 1793 ର चार्टर एक्ट
The act established acquisition of sovereignty by the subjects of the crown is on behalf of the crown, not in its own right. एमती भी क्वेश्चन पचारि परिबो ହେଲା एमती गोटे स्टेटमेंट दे देबो acquisition of the sovereignty by the subjects of the crown is on behalf of the crown, not on its in its own right. लाई स्टेटमेंट टा को आधार रे को एक्ट आधार रे सेटा भी पचारि परिबो 1793 जो कंपनीज पॉलिटिकल फंक्शंस वर ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट माने कंपनी जहां भी करूची कंपनी सेटा करूनी सेटा गवर्नमेंट जहां कहूची सेटा करूची बोली एटा स्टेटमेंट ता देथिला ओके कंपनीज डिविडेंड वर अलाउड टू रेज टू 10% डिविडेंड माने कोन बेनिफिट्स गवर्नर जनरल वाज सेटा दरकार नहीं मोर गिवन मोर पावर ही कुड ओवरराइड द काउंसिल डिसीजन अंडर द एनी सर्कमस्टेंसेस ओके एटा दरकार एटा भी दरकार पड़िबनी इन द गवर्नर जनरल एब्सेंस फ्रॉम बंगाल he could appoint vice president from among the civilian members of the council दरकार नहीं senior company officials छाड़ा company was granted the authority to grant licenses to individuals company employees ओके ताको छाड़ी दियो हां एटा ठीक देखियो जाको प्रिविलेज और कंट्री ट्रेड बोली कहा जाउथला जोथरे कोन करा जाउथला company was granted the authority to grant licenses कंपनी एम्प्लॉइज मानकू आउ अन्य इंडिविजुअल्स मानकू लाइसेंस दे परिबे से माने जाको प्रिविलेज ट्रेड बा कंट्री ट्रेड बोली कहा जाउथला ओके आउ याकू कोन एटा मिले जिबा कारण रु लाइसेंसेस मिले जिबा कारण रु ओपियम को हेवी मात्रा रे चाइना पठिया पई माने स्टार्ट करा गल चाइना रे माने कोन माने गोटे हिसाब रे मोनोपोली करबा स्टार्ट कल ओपियम ट्रेड रे टी ट्रेड रे परे परे Which act of the British Parliament abolished the East India Company monopoly over the trade in India? भारत रे ईस्ट इंडिया कंपनी रो मोनोपोली को काबू करिया पे चेष्टा कला कोए चार्टर एक्ट 1813 commercial trade monopoly of the East India Company except for the trade in tea and trade in China. China रे जो टी ट्रेड ओपियम ट्रेड एक्सेट्रा जो चालू थला सेठी जो 1793 मिली थिला तांको सेथिरे सेटा कंटिन्यू रहिला मोनोपोली किंतु भारत रे जो मोनोपोली से माने करथले ताको कंट्रोल करिया पे चाहिथिला 1813 रो एक्ट जोथरे कोन अलाउड टू एन्जॉय मोनोपोली of China trade हला सेटा रहिला छाड़ा 1793 रो 1813 company didn't permit the Christian missionaries to work in the Indian people due to fear of hurting religious sentiments of Indians okay 1793 रो 1813 जाय क्रिश्चियन मिशनरीज मानन को एठी धर्म प्रचार करिया पे माने लिमिट रे रखितिला तां किंतु 1813 रो चार्टर एक्ट कोन कला तांको फ्री हैंड दे देला रिलीजन प्रोपागेट करिया पे धर्म प्रचार करिया पे ओके आउ एथरे कोन ब्रिटिश गवर्नमेंट अज्यूम्ड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आईडिया ऑफ द स्टेट रिस्पांसिबिलिटी फॉर एजुकेशन एडा न मन रखले चले एटा गोटे पॉइंट अछि देखो लास्ट 1833 रो जो ये एक्ट थिला ये कौन करथिला ended all the activities of the East India Company as a commercial आगुरु माने कोन 1833 पूर्वरु 1813 रे मोनोपोली तांकर सरी थिला देखो 1813 रे मोनोपोली एंड हेतिला 1833 रे पुनी कोन करा हला चार्टर एक्ट रे ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल बॉडी बोली ही कोन घोषणा माने ताकू आख्या दिया गला ना ताकू से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बोली कर दे ओके 1858 रे ताकू हटे दे माने धीरे धीरे से माने भारत रे निजर रूल इम्प्लाय करि छंती ला एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी ओ एक्ट भारत रे प्रिंसिपल ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करिथिला 1909 1919 1935 1947 कोड 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 माने ब्रिटिश माने जते एक्ट पास करथिले भारत रे सबठु लंबा एक्ट थिला 1947 जोटा कि भारत को स्वाधीनता देला आ तार सेकंड रे जदी कहबा सेटा थिला 1935 सेकंड लॉन्गेस्ट ओके जो थरे आमे आगरु कहले जे 32 सेक्शंस थिला 14 पार्ट्स थिला 10 टा शेड्यूल थिला ओके any Indian legislature cannot modify this act as one of the rigid acts of the constitution किंतु 1947 रो जो एक्ट आसिला सेतरे कोआ गला 1935 रो एक्ट को चाहिले मॉडिफाई करिकि समान निज देश रे लागू करि पाए किंतु 1935 रे कोआ जायतिला जे एटा इंडियन लेजिस्लेचर रे मॉडिफाई हे करिवन रिजिड ओके जोटा कि 1937 रे आसीथिला पास हेतिला बा सॉरी इफेक्ट हेते 1935 रे आसीथिला 1937 रे लागू हेतिला लॉर्ड ललित गो थिले से सब ओके तो एथिरे आसिला जो पॉइंटटा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी माने को एटा गोटे एमिति गवर्नेंस सिस्टम जो थरे कोन 1% होल्ड द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द स्टेट ओके but in a constitutional autocracy according to the government of India act एक छत्रवा the constitution provided absolute power over all provinces to the governors and governor general who worked on behalf of the crown तांकु बेसी पावर दिया गवर्नर्स और गवर्नर जनरल्स constitutional autocracy एक छत्रवाद शासन ओके माने ए जो एक्ट थिला एटा जेहेतु ब्रिटिश गवर्नमेंट ऊपर ता पूर्वरु बहुत गुडा प्रेशर पड़िथिला भारत को डोमिनियन स्टेटस देबा पर बहुत गुडा हिस्टोरिकल इवेंट्स हेतिला सही समय ता पूर्वरु तो एटा गोटे अटेम्प्ट थिला बट जोटा कोन मिजरेबली फेल करथे सेति पे जवाहरलाल नेहरू याको कोन कहथिले चार्टर ऑफ स्लेवरी कहथिले ओके बाकी सब तो पैसा दिछ थ्रू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर कमर्शियल activities of East India Company finally put to an end एबे कहले बा कमर्शियल एक्टिविटीज को ये रे बंदला दिटा क्वेश्चन पूर्वरु कहितिले ता गोटे कमर्शियल बॉडी भाव रे आउ आकलन करा गला नै ता गोटे रूलिंग बॉडी को आगला एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी चार्टर एक्ट 1833 ओके 1833 रो एटा सब मेन पॉइंट गुडा का थिला administration was established centralized governor general of bengal governor general of india william bentinck governor general of bengal को governor general of india को आगला फर्स्ट थिले कि विलियम बेंटिक ट्रेड मोनोपोली एटा इंपोर्टेंट पॉइंट था छोटे छोटे सब प्रकार एग्जांपल ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन ट्रेड इज एंडेड 1793 रे ट्रेड मोनोपोली दिया जाइथिला 1813 रे इंडिया रे ट्रेड मोनोपोली बंद करा जाइथिला आ जेहेतु 1833 रे ताकू कमर्शियल फेस करूथुवा कंपनी भाबरे तार ना हटे की एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी करा हेतिला दैट इज व्हाई जो ट्रेड मोनोपोली थिला चाइना सहित सेटा भी बंद हे जाइथिला ताकि से आ बिजनेस बॉडी रहिलानी ना एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हे गेल ओके गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास डिप्राइव्ड ऑफ देयर पावर्स फ्रॉम मेकिंग लॉ सब लॉ रहिबे का हाथ रे रहबो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हाथ रे ओके से माने केवल सजेशन दे परिबे तांको अंडर थिबा काउंसिल तापरे गवर्नर जनरल को कहबे ला ब्रिटिश कॉलोनी भाबरे एस्टैब्लिश हला कंप्लीटली 1833 रे ओके इट एक्सटेंडेड अर्लियर टू द एक्सेप्ट एटा छाडी दियो इट एंडर द अर्लियर एक्सेप्शन छाडी दियो लॉ कमीशन अपॉइंटेड टू कंसोलिडेट कोडिफाई इंडियन लॉ एटा दिके मन रखबे लॉ कमीशन हेतिला 1833 रो चार्टर एक्ट रे एटा दरकार नहीं हां एटा देखि सॉरी एटा ठीक अछि सर्विसेज एंड जॉब्स अंडर कंपनी ओपन टू ऑल इंडियंस समझ बे इंडियंस मन को भी पार्टिसिपेट करे पे कोआ गला ओके ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स फॉर इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ स्लेव्स इन द एटा दुई चारटा पॉइंट मेन हो 1833 रो
Which act for the first time made it possible for the Indian to take some share of the administration of their country? Administration रे तांको चांस मिलिला. Administration रे. Okay, 1861. Indian Council Act 1861. Okay, Section 87 of the Charter Act 1833 stated that no Indian or natural born subject of the Crown resident alien should be region of the foundation of participate on Indian during political movement. अरे 61 ना 33 ଏଇଥିରେ ଏବେ କହିଲେ ବା ଏଟା ଯୋଉଟା services and jobs under the company open for all Indians ଏଟା 33 ହବ ନା 61 ହବ 1833 ର act ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା no Indian or natural born subject of the crown resident in India should be by region only for his religion, place of birth, descent, color of or any of them be disqualified. माने जे भारत रे जन्म हेतिबा ब्रिटिश लोक हेथाउ कि भारतीय हेथाउ ला ताकू डिस्क्वालिफाई करा जाई परिबो नाही कोनोसी भी क्षेत्र रे तार प्लेस ऑफ बर्थ डिसेंट कलर ओके कला गोरा वर्णनीति रिलीजन आधार रे डिस्क्वालिफाई करा जाई परिबो नाही समस्त को एम्प्लॉयमेंट मिलिबो कंपनी रे 33 अब बोधे एटा 61 न हेटा 33 हवा कथा एथि भी आमे कहले फास्ट जो ता पूर्व रे एटा जो देछि ए पॉइंट services and jobs under the company open for all Indians 33 हवा कथा administration of their country some share of the administration 61 हबो एटीन 61 रो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 रो इंडियन काउंसिल एक्ट रे कोन कोन हेथिला लॉर्ड कैनिंग को समय रे हेथिला एथरे कोन कोन सिस्टम थिला कहवा पोर्टफोलियो सिस्टम करा थिला रिकॉग्निशन मिली थिला कैबिनेट गवर्नमेंट हेथिला भारत रे Viceroy must nominate some of the Indians to the non-official members of the council. Indians in law-making process सेटा तो कहला तमे ओके रिवोल्ट हैला परे Viceroy Lord Canning nominated 3 Indians to the legislative council. प्रथम 3 जण थिले दिनकर राव महाराजा पटियाला और राजा बनारस ठीक तो ताले 33 एटा एडमिनिस्ट्रेशन कहछि ठीक अछि एडमिनिस्ट्रेशन कहछि ना ता एम्प्लॉयमेंट बाबद रे दिथिला एडमिनिस्ट्रेशन कहछि डी हो करेक्ट आंसर ता डी Which of the following act of the British had separated legislative from executive? Executive और legislative separate ही थे कहा द्वारा वो एक्ट द्वारा 1853
Charter Act 1853 separated legislative executive function of the Governor General Council. गवर्नर जनरल काउंसिल जोटा थिला तार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग करथिला. ओके. इंट्रोड्यूस द लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल. 1853 रे लोकल रिप्रेजेंटेशन माने इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडियन माने मध्य रिप्रेजेंटेटिव भाव रे रही परिबे बोली एटा हितिला. एटा गोटे मन रखिबा इंपोर्टेंट पॉइंट ता. ओके. हाउ कोन थिला अपॉइंटमेंट ऑफ द सेपरेट गवर्नर फॉर द बंगाल प्रेसिडेंसी. आगर गवर्नर जनरल ही बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिले. अपॉइंटमेंट ऑफ सेपरेट गवर्नर फॉर द बंगाल प्रेसिडेंसी हला रिड्यूस फ्रॉम 24 to 18. एटा दरकार नहीं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स माकुले कमिटी हितिला 1854 रे. ओके. फास्ट सिविल सर्विस एटा डे मन रखियो. ठीक अछि. एटा ही गला आंसर. लास्ट क्वेश्चन. In which of the following act territorial division of governance in India was done? को एक्ट रे एटा सॉरी नहीं ए आ गोटे क्लास हो आउरी क्लास एमती 50-60 टा क्वेश्चन एथरो कर देथिबा. एटा इंपोर्टेंट टॉपिक टा. एटा क्वेश्चन आसीबाटा प्राय प्राय थय एस रे भी और ओसीएस रे. Territorial division of governance in India was done. Territorial division in governance 1958 Government of India Act. Okay. Act for the good governance. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एटा भी मन रखियो ऑनलाइनर टा. एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस इन इंडिया बोलिया को कहा जाए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 53 दे 58 कली तो ठीक. इट एनएक्टेड द वेक ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 सिपाही म्यूटिनी पर एटा हितिला जोडा ईस्ट इंडिया कंपनी को हटेला. ब्रिटिश काउन आसीला. वाइसरॉय गवर्नर जनरल वाइसरॉय आसीले. ए सब जिंस पैसा. द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैड फुल अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. हेगला ठीक है. राउ गोटे पार्ट करबा तापरे नेक्स्ट टॉपिक को जरा पॉलिटी सेक्शन टा को टिके बेसी फोकस करबा. ओके. पॉलिटी गवर्नेंस पार्ट टा टिके क्वेश्चन आसुची हार्ड क्वेश्चन सब सब्जेक्ट रो करबा माने वीकली एमितिया क्लास 6 टा जो हबो कि 5 टा हबो सेथिरु पॉलिटी डीटा क्लास करबा. ज्योग्राफी दीटा करबा. अब जो गोटे क्लास रहिबो सेटा को वीकली गोटे गोटे ये करबा. ठीक अछि. डन.